गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मैंडेटरी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड इट्स फॉर मनरेगा वर्कर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ABPS जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है मनरेगा के वर्कर्स के लिए, उनकी पेमेंट के लिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला है कि वो कंसीडर कर सकती है एग्जाम्पशन ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एक बैंक लेड मॉडल है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ मूव करने की बात करता है। और ट्रांजैक्शंस जो होती हैं फाइनेंशियल, उनको माइक्रो एटीएम के थ्रू जो है वो इनिशिएट करता है। ठीक है। तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन करके जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो किसी भी बैंक के जो है पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवा सकते हैं। तो अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बैंक के कस्टमर को आधार यूज़ करने के लिए एम्पावर करना, बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल से रिलेटेड, फंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर करना। गोल ऑफ आरबीआई भी जो है ताकि इलेक्ट्रॉनिफाई की जा सके रिटेल पेमेंट्स, उसको भी सर्व करना। गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट्स की डिसबर्समेंट भी जो है वो सही बेनिफिशरीज के पास पहुंचाना। ठीक है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बाकी इंटरऑपरेबिलिटी भी रखना बैंक्स के अंदर। ठीक है, कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आप AEPS के थ्रू जो है ये फैसिलिटेट कर सकते हो ट्रांजैक्शन। तो अगर हम देखें मनरेगा के लिए जो ये ABPS है, इसको 2017 से ही यूज़ किया जा रहा है। और इसकी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी है, आपको पता ही है। आधार नंबर्स अब ऑलमोस्ट हर सिटीज़न के पास आधार हो ही चुका है, हर बेनिफिशरीज़ के पास आधार हो चुका है। तो एक सेफ़ और फास्ट वे मिल चुका है हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। तो अगर हम देखें जुलाई 2023 तक 88% से ज़्यादा जो है वेज पेमेंट्स ABPS के थ्रू ही गई हैं। तो ABPS जो है मनरेगा वर्कर के लिए पहले कहा गया था कि फ़ेब 2023 से मैंडेटरी कर दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको एक्सटेंशन मिलती रही। अगेन इसको एक्सटेंशन मिलकर जो है अब ये 1 जनवरी 2024 से इसको मैंडेटरी करने का प्रोग्राम था। और ये मिक्स्ड रूट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ABPS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है मिलकर जो है बल्क पेमेंट्स जो हैं सब्सिडीज़ और सैलरीज़ की करने वाले हैं। अब पूरा प्रोसेस जो है वो बेनिफिशरीज़ को उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने का जो है वो डिजिटाइज्ड है ऑफ कोर्स। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो एग्जामेशन देने को तैयार है। अगर कोई ग्राम पंचायत को लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या आधार रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट जो है कंसिडर कर सकती है एग्जामेशन एक केस बाय केस बेसिस पर, जब तक वो इशू को सॉल्व नहीं कर लिया जाता। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है वो फर्स्ट वेरीफाइबल टेक्निक बनी है जिसको कई फील्ड्स ऑफ साइंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग होते क्या है? एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक एज जो ऑब्जेक्ट की एज को डिटरमिन कर सकते हैं, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कार्बन के एक आइसोटोप कार्बन 14 का। तो कार्बन 14 कैसे बनता है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कॉस्मिक रेज जो है वो एटम्स ऑफ गैसेस के साथ जो है वो रिएक्ट करके न्यूट्रॉन्स रिलीज़ करती हैं। खासकर जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं ये नाइट्रोजन 14 आइसोटोप के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है ये कार्बन 14 प्रोड्यूस होता है। फिर जो कार्बन 14 है वो भी कॉन्स्टेंटली कंबाइन करता रहता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब ये कंपाउंड लोगों की बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, अदर बायोमास में एंटर करता है कार्बन साइकिल के थ्रू, तब ये जो है कार्बन 14 एक तरह से हमारे बॉडी में जो है ऑर्गेनिक मास में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो अब कैसे रेडियो कार्बन डेटिंग जो है काम करती है? तो जब भी कोई ऑर्गेनिक एंटिटी जैसे ह्यूमन बॉडी भी जब अलाइव होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली कार्बन एक्सचेंज करती रहती है अपनी सराउंडिंग के साथ। कार्बन 14 जो है वो लॉस्ट भी होता रहता है और रिप्लेनिश भी होता रहता है। लेकिन जब इंडिविजुअल मर जाता है तब बॉडी जो है ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाती। कार्बन 14 जो बॉडी में होता है वो धीरे 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 डिके होने लगता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन 14 लॉस्ट होता है। तो बेसिकली हम ये
इससे मेजर कर सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग में कि कितना कार्बन 14 बॉडी में बचा है, किसी भी बॉडी में या प्लांट में या एनिमल में, उससे हम उसकी एज पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है इंडिया और यूएई के बीच में जनवरी 2 से लेकर जनवरी 15 तक राजस्थान में कंडक्ट की जाने वाली है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इनॉग्रल एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन यूएई और इंडिया, और इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए की जा रही है। ऑफ कोर्स इंडिया और यूएई के रिलेशंस देखें तो 1972 से ये रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए हैं, जब यूएई ने अपनी एम्बेसी खोली थी इंडिया में। फर्स्ट एवर इंडिया यूएई जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज सितंबर 2008 में जो है अबू धाबी में हुई। इंडिया एक रेगुलर पार्टिसिपेंट है बायनियल इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन का भी अबू धाबी में। और जो बायलैटरल एक्सरसाइज जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज जायद तलवार, इंडिया जो है यूएई के साथ करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने आपस में लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सचेंज किया है। हर साल 1 जनवरी को जो है ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट जो है 1988 में साइन किया गया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो थे, इंडिया में राजीव गांधी थे, और ये ट्रीटी जो है 1991 में इन्फोर्स की गई। हर साल 2 कॉपीज़ ऑफ उर्दू और हिंदी में जो है ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ जो है वो एक दूसरे की कंट्रीज़ की शेयर की जाती हैं। बोथ कंट्रीज़ एक दूसरे को बताती हैं कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या फैसिलिटी जो है वो इस एग्रीमेंट में अगर आती है तो 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर पावर, रिसर्च रिएक्टर्स, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम एनरिचमेंट, आइसोटोप सेपरेशन, रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी कोई भी अगर आ रही है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की, तो वो आपस में एक दूसरे को बताई जाती है ताकि मिस कैलकुलेशन ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोजोन। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोजोन की जो इकोनॉमी है वो मॉडेस्ट ग्रोथ देखने वाली है इस साल। यूरोजोन बेसिकली एक ज्योग्राफिक और एक इकोनॉमिक रीजन है जिसमें लगभग सभी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आती हैं जो अपने आप को फुली इनकॉर्पोरेट कर चुकी हैं यूरो एज देयर नेशनल करेंसी। तो इसमें 20 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की करंटली। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो इनके मॉनेटरी पॉलिसी को भी डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक मनी की प्रिंटिंग और यूरो के जो नोट्स होते हैं उसका काम भी यही करता है। ठीक है, जैसे हमारा आरबीआई है। तो कैसे ज्वाइन करती हैं यूरोजोन में कंट्रीज़? तो कोई भी कंट्री ईयू मेंबर स्टेट अगर उसको यूरोजोन को ज्वाइन करना है तो उसको कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब प्राइस स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, साउंड पब्लिक फाइनेंसेस होने चाहिए और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सभी ईयू मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट डेनमार्क, उनको जो है यूरो को अडॉप्ट करना उनका गोल होता है, और जो है यूरो एरिया को जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं जब वो ये कंडीशंस जो ऊपर मेंशन की गई हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की, जब वो अटेन कर लेती हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993 के बाद जिसको बनाया गया कॉपरेशन और इंटीग्रेशन करने के लिए अमंग मेंबर स्टेट्स। एक सिंगल मार्केट है जहाँ पर गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल फ्रीली मूव कर लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बबल बेबी सिंड्रोम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 मंथ ओल्ड गर्ल बबल बेबी सिंड्रोम से जो है वो सफ़र कर रही थी, उसको भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया गया है मुंबई में रिसेंटली। तो बबल बेबी सिंड्रोम क्या होता है? एक सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी है इसको हम कह सकते हैं। तो होता क्या है, कैसे होता है ये? तो इम्यून सिस्टम इसमें जो है वो बोन मैरो में हमारे रहता है। ठीक है, और इसी से ही रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बनते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शंस से फाइट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि अब वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो है बाहर के इन्वेडर्स को आइडेंटिफाई करके किल करते हैं। बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
अगर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, या मतलब जिसमें हम सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी अगर हम कहें डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन फाइटिंग ब्लड वाइट ब्लड सेल्स है, ये इनको अफेक्ट करता है। चाइल्ड की बॉडी में बहुत ही कम लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इन्फेक्शन को फाइट करना। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? म्यूटेशंस हो सकती हैं कुछ डिफरेंट जीन्स में, तो मतलब पेरेंट्स जो हैं ये डिसीज़ आगे अपने बच्चों को पास करते हैं, ठीक है। तो जो बेबीज़ होते हैं वो जब पैदा होते हैं तब तो हेल्दी दिख रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे क्रॉनिक डायरिया रहता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, ओरल थ्रश हो जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमरजेंसी होती है ये। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो बेबीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते अपने पहले बर्थडे को भी। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही जो है वो बेसिकली इसकी मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं KH-22 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन की एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने रिसेंटली कहा है कि कंट्री का जो एयर डिफेंस है वो अनेबल कर रहा है KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि रशिया लॉन्च कर रहा है उसको शूट करने के लिए, ठीक है। तो KH-22 मिसाइल एक सोवियत एरा लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है USSR द्वारा 1960s में। ऑफ कोर्स इसको अपग्रेड भी किया गया है और 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इसको अब लाया जा चुका है। 1000 किलोमीटर का किलोग्राम का वॉरहेड है इसमें, और इसकी रेंज 500 किलोमीटर्स होती है। साल 2000 में, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साल 2000 में यूक्रेन ने ही 386 जो KH-22 मिसाइल्स रशिया को ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि वो गैस की डेट की जो पेमेंट है वो नहीं कर पा रहा था, तो उसने जो पेमेंट है वो इस मिसाइल्स के फॉर्म में की थी। आज वही मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is mandatory ABPS for Manrega workers. So this topic is important for your governance section. So with ABPS now being made mandatory for Manrega workers, government has announced that it may consider exceptions on a case-to-case basis. So what is Aadhaar enabled payment system and its objectives? So AEPS is basically a bank-led model which allows online interoperable financial inclusion transactions at POS or micro ATM facilities through business correspondents of any bank using the Aadhaar authentication. So the objective of AEPS is to empower bank customers so that they can use Aadhaar to make their or to access their bank account, or and to perform basic banking transactions like cash deposit, cash withdrawal, fund transfer, etc. through a business correspondent using Aadhaar, and the goal is to further financial inclusion. So it is also meant to serve the goal of RBI, that is electronification of retail payments, and to facilitate disbursement of government entitlements. Okay, it will also facilitate interoperability across banks in a safe and secure manner. So what is this ABPS for Manrega? So it has been in use since 2017, and almost there is universal availability of Aadhaar numbers currently in our society, and almost every citizen has been able to get its Aadhaar card, and it is a safe and faster way of payment transfer also. And in if we look at the numbers by July 2023, 88% plus wage payments were made through this ABPS only. So ABPS was supposed to be made mandatory by Feb 1st 2023, but after several extensions, 1st January 2024 was selected as the mandatory date. Okay, so until then mixed route was being followed. ABPS and National Automated Clearing House, which is an interbank system, will be using the bulk payments for subsidies and salaries. Okay, so ABPS ensures that payment of beneficiaries into their bank accounts get transferred, even if there is frequent change of bank account by the beneficiary. So why then this decision to exempt uh,
has been taken. So government has said that in case any gram panchayat is having technical problem or Aadhaar related problem, Government of India can consider exemption from ABPS on case by case basis till the resolution of the issue can be found. Okay. So the next topic is radiocarbon dating. This topic is important for your science and tech section. So this technique of radiocarbon dating has brought the first verifiable way to do this to many fields of science. So radiocarbon dating is a method in which the age of an object can be determined using the carbon's isotope carbon 14. So how is carbon 14 formed? So it is created in Earth's atmosphere itself when cosmic rays slam into the atoms of gases and release neutrons. Then these neutrons interact with nitrogen 14 isotope, which produces carbon 14. So because these cosmic rays uh, pass through Earth's atmosphere, carbon 14 is created constantly there. So it readily combines with atmospheric oxygen to form radioactive carbon dioxide. This compound then enters the bodies of plants, animals, and other biomass through the carbon cycle. It is in the form of carbon dioxide. Okay. So these carbon compounds enter the body and they diffuse into various ecosystems also. Okay. So how does this radiocarbon dating work? So whenever an organic entity like human body is alive, it constantly exchanges carbon with its surroundings. So through these activities, carbon 14 is both lost from the body as well as replenished. But if the individual dies, then this body is no longer performing these activities. So the carbon 14 in the body starts to decay, and the more time passes, the more will be the amount of carbon 14 which will be lost. So by measuring the amount of carbon 14 which is left in the body or the dead uh, organic matter, we can determine its age. Okay. So the next topic is exercise desert cyclone. This topic is important for your international relations and your security section also. So the joint military exercise desert cyclone 2023 between India and UAE will be conducted between 2nd January to 15 January in Rajasthan. So exercise desert cyclone is the inaugural edition of the joint military exercise between the two countries, and the exercise aims to enhance interoperability by learning and sharing best practices in urban operations. So, if we look at India and UAE relations, they were established in 1972 when UAE opened its embassy in India in 1972. So, the first ever India UAE joint Air Force exercise started in September 2008 in Abu Dhabi. India is also a regular participant in the biennial International Defense Exhibition in Abu Dhabi, and the bilateral exercise Zayed Talwar with the UAE, which is a maritime exercise, is also being conducted between the two countries. So the next topic is agreement on nuclear installations. This topic is important for your international relations topic. So India and Pakistan have exchanged the list of nuclear installations and facilities through diplomatic channels recently. So what is this agreement? It was signed in 1988 between the then Prime Minister of Pakistan Benazir Bhutto and India's Prime Minister Rajiv Gandhi. The treaty came into force in 1991 with uh, with the provision that two copies each in Urdu and Hindi are shared between the two sides. So the need for the agreement arose when in 1986 Indian Army carried out a massive exercise Brass Tacks, which raised fear of an attack on nuclear facilities. So since then, both countries have been negotiating to reach an understanding towards the control of nuclear weapons, and this culminated into the treaty. So this agreement mandates that both countries would inform each other about any nuclear installations and facilities to be covered under the agreement on 1st of January each year. Okay, so it provides information regarding nuclear power and research reactors, fuel fabrication, uranium enrichment, isotope separation, and reprocessing facilities in each other's country. So the next topic is Eurozone. This topic is important for your international relations. So Eurozone economy is set for modest growth this year. Eurozone is basically a geographic and economic region which consists of all those European Union countries who have fully incorporated euro as their national currency.
So it currently consists of 20 countries in the European Union area. European Central Bank exercises the sole power to set the monetary policy for these Eurozone countries. It also decides the printing and minting of Euro notes. Okay, so how do countries join Eurozone? So they have to follow this convergence criteria, which consists of price stability, sound public finances, durability of convergence, and exchange rate stability. Only after that they can become members of Eurozone. So all EU member states except Denmark are required to adopt the euro and join the euro area once they are ready to fulfill them. So, what is European Union? It is a political and economic union of 27 member states, and it was established by the Maastricht Treaty of 1993. And the main goal of EU is to promote cooperation and integration among its member states. So, it has a single market and where goods, services, and capital can move freely. So the next topic is bubble baby syndrome. This topic is important for your social issues. So a 2-month-old girl who is suffering from bubble baby syndrome has received bone marrow transplant recently in Mumbai. So what is bubble baby syndrome? So it is a very rare genetic disorder. It is typically known as severe combined immunodeficiency disorder. It is basically a life-threatening problem with immune system. So it is a type of primary immune deficiency, and living a normal in a normal environment can be life threatening to a child who is having this bubble baby syndrome. So what happens in this severe combined immunodeficiency disorder? The immune system starts. We know that immune system starts in our bone marrow, and it produces red blood cells, white blood cells, platelets. White blood cells protect the body from infections and foreign invaders. So there are different kinds of white blood cells, including lymphocytes. Lymphocytes consist of T cells which identify and kill these invaders. B cells make antibodies. So under SCID, what happens is that both these infection fighting white blood cells get affected. So the child's body has too few lymphocytes, so that means it cannot fight the battle against germs. Okay, so what is the cause of it? So generally it is inherited mutation in the different genes which causes this disease, which means that one or both the parents can pass down this disease to their child. So babies with SCID may appear healthy at the time of birth, but soon the problems start appearing, like they fail to thrive normally. They have chronic diarrhea, frequent infections, respiratory infections, etc. So it's a pediatric emergency. Without treatment, babies are not likely to survive their first birthday itself. Okay, so currently the treatment involves a stem cell transplant. So the next topic is KH-22 missile. This topic is important for your security section. Ukraine Air Force spokesperson has recently said that country's air defense systems were unable to shoot down any of the KH-22 supersonic cruise missiles which were launched by Russia. So KH-22 is a Soviet-era long-range airborne supersonic cruise missile. It was developed by USSR in 1960s, and of course, it was upgraded in 1970s. It has an impressive speed of 4,000 kilometers per hour. It can carry a 1,000 kilogram warhead, and it has a range of 500 kilometers. So the interesting thing is that in the year 2000, Ukraine transferred 386 of these missiles to Russia because it was unable to pay for the gas debt it had with Russia. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.